Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं 9/11 के मेमोरियल म्यूज़ियम में हूँ. So this is the map. यहाँ पे ये दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स की बिल्डिंग होती थी पहले. So उन्होंने इसकी उनकी जगह पे पुल बना दिया. So नॉर्थ पुल एंड साउथ पुल. लेट्स गो सी. वो वाली बिल्डिंग 9/11 का म्यूज़ियम भी है. So like parts of the old World Trade Center building, उसके पुराने पार्ट्स बिल्डिंग के उस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, which is really interesting and cool. So ये वो जगह है जहाँ पे World Trade Center की बिल्डिंग होती थी. ये सब के नेम्स लिखे हुए हैं. उन सब लोगों के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होते थे. उन सब लोगों के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में थे जब वो नीचे गिरी. तो जिस तरह ये पुल है उसी तरह दूसरी बिल्डिंग का भी पुल है. तो यहाँ पे ऐसे ही 2 पुल हैं. तो ये हर साइड पे ऐसे नाम लिखे हैं. यहाँ पे बहुत लोग देखने आते हैं. फ्लावर्स रख के भी जाते हैं जिनकी फैमिली मेम्बर इसमें था. So yeah, this is really cool. ये पानी यहाँ तक गिरा हुआ है. So वाटर यहाँ तक आया हुआ है क्योंकि हवा बहुत है. लाइट्स भी ऑन हो गई हैं. तो ये हर वक्त इस तरह ऑन रहता है. रोज़ जिस तरह वाटरफॉल होती है, पूल होता है. आई थिंक रात को नहीं होता शायद.
So ये सब नाम है Donald Americo Di Tullio, Christopher Di Mello, John Charles Jensen, John Charles Jensen. So yeah, that's it. I wanted to show you guys how they have made this memorial 9/11 का. And ऐसा जैसे मैंने ये पुल दिखाया उस तरह का वैसा उधर भी है, क्योंकि 2 buildings थी तो उन्होंने 2 pools बनाए उन दोनों spots पे, same जगह पे. Okay guys, so that's it for today. Like, subscribe and share and comment. Bye.